इस्लामाबाद रीफ्यूलिंग के लिए हम स्टॉप हुए थे कराची, मगर मैंने ख़ुद कराची एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इल्ज़ामात का जवाब दिए। अब फिर ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली जहां अप्रोप्रिएट है हमारा फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात पे इंगेज किया। Thank you, Chair. First of all, I would congratulate you कि आपने पाकिस्तान के केस को बहुत बेहतर इनिशिएट किया, और particularly terrorism जिस तरह आपका it's very close to your heart because of Sheikh Mohammed and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned abortion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए कि इंडियन decent population जिनकी contribution to उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my points, or as a consequence of that intervention, some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. हमें बार बार मेरी सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आपकी लीडरशिप में जो इंडियन डार्क साइड है as far as terrorism is considered as a tool which is being used against the state of Pakistan and its common populace, it needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप यू आर द ग्रैंडसन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसकी इंडिया के साथ एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग ली है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स नैरेटिव. सो वी शुड ऑल कैरी दैट. हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है, और इस बात को मज़ीद स्ट्रेंथ के साथ करनी चाहिए. उनकी इन्वेस्टमेंट ब्राउंडर भुट्टी में थी. मेरी दरख्वास्त है नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ तो साथ में सरफराज भुट्टी ले जाएँ, तो भुट्टी वर्सेस भुट्टी उनको पता लगा. आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, वो बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट जो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड, और जब मैंने कलभूषण का एक फैक्ट का जिक्र करते हुए, मतलब आई वाज़न्ट ट्राइंग टू स्कोर पॉइंट्स ऑफ एनीथिंग, मेरा मकसद ये था कि आप हमें नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात करते रहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी हमें एड्रेस करना चाहिए, बस ज़रा इस स्टेट एक्टर का आप जवाब दें. जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट, कैम्ब्रिज एजुकेटेड लोग भी जज्बाती हो गए, उससे मुझे sort of अंदाज़ा हुआ कि this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey, because उनका एक बड़ा insular, even though there's supposedly a big democracy now और इतना ज़्यादा media है उनका, they have such an insular environment कि इनको कुलभूषण यादव के बारे में पता नहीं है. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, और हमारा right है कि हम इस इशू को उठाएं, इस इशू पे हम हाईलाइट भी करें, मगर साथ साथ मेरा मकसद ये नहीं था कि ओ यू मेंशन वन एंड आई मेंशन अनदर. हमारा मकसद, हमारा मैसेज ये था कि जो हमारे मसले हैं हम इनका हल निकालने की कोशिश करें, मगर ऐसे हमसे ना बात करें कि सारे बुराई यहाँ और आप किसी किस्म की आसमान से उतरे हुए लोग हैं. मेरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम उस मौके पे आए कि हम इंगेज कर सकते हैं, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. कि हमारा सिक्योरिटी के लिए, आपका सूबा के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए, मगर ख़ास तौर पे जो एडवेंचरिज्म हो रहा है आपका सूबा में, और फिर जो भी उनके कंसर्न्स होंगे, हम भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि जो आपके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, अगर आप कहेंगे कि सारे मुसलमान दहशतगर्द है, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ टैंजिबल थिंग टू डील. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक, Pakistan has always been willing to engage, and we continue to be willing to engage. Sir, ये अपना इशू भी यकीनन
مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارن منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے، تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت سوال کیا اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul، اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic، ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں، we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked، and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں، regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that، کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا، سیکیور ہوگا، پراسپرس ہوگا، تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. بٹ the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی we are cognizant of that, the Afghans are also cognizant of that, and this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to، and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو افغانستان کے ریسورسز ہیں، جو ان کے اپنے فنڈز ہیں، they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and to wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کے انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے، ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کویشچن ہے، پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویشچن ہے، ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے، چین کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے، میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا، پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نخواستہ we won't be the last victims.
अगर economic situation इस तरीके से बिगड़ता जाएगा अफगानिस्तान में, रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफगानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहाँ से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil, conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा bilateral था चीन के साथ, फिर trilateral था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा bilateral था interim government के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda, and in an ideal situation, I too have a broader agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. कि Tehreek-e-Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning. This was my one-point agenda. कि इसको आपने हमारा page पे आके, we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. क्योंकि एक issue हल हो जाता है, then there's nothing that can stop us. हम पूरा दुनिया को मिलके मुंह दे सकते हैं. मगर जब तक ये मसला हमारे दरमियान में रहेगा, तो there'll be a lot of space for problems to take place. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. यहाँ तक कि उनके पास वो border force नहीं है कि वो अपना border manage करे, and border management science all over the world will tell you कि border manage करने के लिए जो basic element है कि वो एक तरफा manage नहीं हो सकता है, वो दोनों तरफ manage हो. ये उनका genuine missiles हैं. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And वो लोग जो हमारा आईन नहीं मानते हैं, जो हथियार उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, उनको we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. कि इस पे हमने साथ मिलके काम करना है ना, पाकिस्तान को हर वो काम करने के लिए तैयार है इन organizations का, इन तंजीमों का मुकाबला करने के लिए. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage
with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں ساتھ طے کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے یہ ایشو طے ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے حل ہو جاتے, ان کے اپنے مسئلے حل ہو جاتے. یہ جو ہمارا ایس سی او ہے, ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ انلاک ہو جاتا. So thank you for your question. کم عمری میں جو منصب آپ نے سنبھالا ہے اور آپ کی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں, آپ کی میٹنگز بھی, گفتگو بھی, اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال, توانگری بدل است نہ بمال. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, نہ عمر کے ساتھ. اور سخاوت جو ہے وہ مال کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی کارکردگی ہوئی ہے اس کو میں تحصیل کی وجہ سے دیکھتا ہوں. چلانے تحصیل کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم تو نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہے, انگیجمنٹ کا حامی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہیں. اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, جس کا بھی حکومت ہو, ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس, ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم, ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دی روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں, جو سپر پاورز ہیں, جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا, ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے, وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں, کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے, انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں, میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے, ان کا جو دے آر ویری ایموشنل, دے آر ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فارن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایپ پہ تھے, میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا, مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے
जो 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 नया दौर है उसमें मेरा ख्याल में जो जंग करवाने वाले लोग हैं उनके लिए कम जगह होगा और जो जो अमन कायम वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा जगह होगा. जैसे ये अच्छा खबर हमें मिला, जैसे हमने देखा कि चीन, सऊदी और ईरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स हुआ, उसके रिपल इफेक्ट्स आपको पूरा मिडिल ईस्ट में नज़र आना शुरू होगी, यमन में आपको नज़र आना शुरू हो गया है. और उम्मीद है कि जैसे अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो ईरान और सऊदी ताल्लुकात में बेहतरी की वजह से पाकिस्तान पे बहुत अच्छा जो है असर होगा. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. तो जहाँ तक G20 का पूरा मीटिंग नहीं तो ये यूथ कन्वेंशन, टूरिज्म का जो इवेंट्स रखे गए थे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यकीनन अफसोसनाक, कंडेमेबल, जितने दफ़ा हम कंडेम करें वो कम होगा, ऑफेंसिव, obnoxious. मुझसे इस पे सवाल किया गया था जब मैं भारत पे था, और मैंने तब भी उनको यही जवाब दिया कि ये तो समझ रहे हैं कि ये शायद बड़ा कमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं. इनका एरोगेंस जो है that is on display for the world to see. कि भारत कह रहा है तो hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. मेरी मर्जी जो मैं करूं. वो शायद खुश हो रहे होंगे कि ये काम कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल में उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. तो ये जितना अपने अना पे और अपनी जिद की वजह से इस किस्म के काम करेंगे, उतना ही मेरा ख्याल में वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे. This was an obnoxious effort. मगर आपने देखा, मैंने सिर्फ एक ही इतना ही सा वादा किया था भारत में जब मुझसे पूछा गया. बड़े क्लेम्स नहीं, मैंने सिर्फ इतना से उनको कहा कि आप देख लेंगे भारत विल बी अनएबल टू अचीव 100% अटेंडेंस. और इसलिए कि मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए कि इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इस गोल पे नाकाम रहे. एंड दे वर अनएबल टू गेट, आई थिंक इट वाज 60 was the total invite list, कि वो 60 जो उनका टारगेट था, जिनको उन्होंने दावत दिया, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended, but attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. और मैं ज़रा देख रहा था कि मीडिया कवरेज, कि अगर आप नॉर्मलसी को दिखाना चाह रहे हो, नॉर्मलसी का पैगाम और टूरिज्म का पैगाम भेजना चाह रहे हो जम्मू कश्मीर के बारे में, मैंने सारे यूनाइटेड किंगडम का, अमेरिका का, फॉरेन पॉलिसी का, मैंने सारे ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो उठाए. मुझे एक नहीं मिला. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. हर रिपोर्ट में मुतनाज़ा इलाका का जिक्र है, या 2019 का जिक्र है, या ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस का जिक्र है. तो अगर उनका मकसद नॉर्मलसी का पैगाम था, उसमें वो नाकाम रहे.
अगर उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को बुला के पूरी दुनिया मान भी लेंगे, सारे आ ही जाएंगे और उनको एक किस्म का सील मिलेगा, वो भी नहीं हुआ. जहां तक आपके एफर्ट्स होंगे, पाकिस्तान के एफर्ट्स होंगे, इनके एफर्ट्स होंगे, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आई कैन ब्रीफ यू ऑफ द record, not on the record, but suffice to say कि this is something कि आप जितना भी condemn करें वो कम होगा. Every crisis provides an opportunity, and इस crisis का opportunity ये था कि वो कश्मीर के अवाम जो 2019 से उनको बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा था कि उनका अपना इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, उनका अपना इशू को मीडिया अटेंशन दिलवाया जाए, उनको वो मौका मिला कि उनको मीडिया अटेंशन, इंटरनेशनल अटेंशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ देयर इशू, उनको वो मौका मिला. दूसरा, आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक या JKPP का नुमाइंदगी तो है, लेकिन मैं कश्मीर गया था पिछले 2-3 दिन, कश्मीर में था, जब मैंने समझा कि ये साथ साथ हो रहा है तो हम भी एक ज़ारी जैती करें. नाइक साहब, इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैं उधर आई वेंट फॉर स्पीच एट देयर लेजिस्लेटिव असेंबली. आप ये अगर सेनेट में कोशिश करते या आप नेशनल असेंबली में कोशिश करते, वी कुडंट रेप्लिकेट देम. इट वाज सो एनकरेजिंग, इट वाज सो पॉजिटिव, इतना अच्छा पैगाम दिया गया ये पूरा दुनिया कि चले इधर पाकिस्तान में जितना हम आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ कश्मीर का मौक़िफ़ था. कश्मीर के तमाम सियासी जमातें ना सिर्फ मौजूद थे, अपने जो तकरीरें थे उन्होंने अपनी तकरीरें की, और एक इतना अच्छा गुड फीलिंग के साथ मैं वहाँ से निकला कि मैंने समझा कि ख़ास तौर पे एक नौजवान होते हुए कभी कभार जिस तरीके से जिस किस्म के सियासी मसले तो बन जाते हैं, काफ़ी मायूसकन है, मायूसी होते हैं, लेकिन वो हौसला देके, वो यूनिटी देके मैं बहुत खुश भी था. और मैं आपके प्लेटफॉर्म से इनका जो तमाम सियासी जमातें हैं, JKPP, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, AJKPP, PMLN, कोई रह गया भी तो everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And फिर हम जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, फिर हमने जलसा रखा, और जो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है, हमने सब मिलके एक एहतजाजी जलसा भी रखा. जहाँ तक ऑन द डिटेल्स ऑफ who went, who didn't go, हमारा क्या काम था, I'm happy to share that with you, but I would request के अगर कैमरा चल रहा है, हम कैमरा को बंद करें, एंड मीडिया दोस्तों से रिक्वेस्ट होगा कि तमाम लोग वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सेनेट ख़ारिजा अमूर कमेटी